हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं मार्केट में ट्रेडिंग। ये जो मार्केट में अभी का जो ट्रेडिंग फेज है, इट इज बिकमिंग अ लिटिल बिट चैलेंजिंग, क्योंकि ओवरऑल जो वोलेटिलिटी है दैट इज ऑन द राइज, स्पेशली ऑन द इक्विटी साइड। माय लॉट ऑफ माय रीसेंट ट्रेड्स को ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल HBI, दैट इज वन ट्रेड दैट फेल्ड। Then the PayPal breakout, it did not initially work out. Then we had network 18 that usually if we are in the right part of the cycle, it would have fired with that chart structure, but it once again did not do well. Rupa, after a little bit of ride, struggling to have traction. Same for Nika. So a lot of stocks, and even CCL, which is has given good move. If we are in a different cycle, different risk phase, the run would have been much bigger. So clearly, मैं जो देख पा रहा हूँ, this is my observation that within the structure, bull जो market phase है, ये धीरे धीरे छोटा से छोटा होते जा रहा है individual stocks. So बहुत time के लिए, longer time के लिए traction नहीं मिल रहा है trade में. So this video is about the overall risk going up, so and commodities. So why I'm talking about stocks is, जैसे stock का this zigzag volatility is gone up, हम लोग अपने volatility infection, I hope you have seen this video, volatility infection video में I have seen that is spread across the asset class. So that means we have to be cautious while trading in commodities as well, क्योंकि we can see similar sort of zigzag move, high volatility in the commodity space. तो कमोडिटी में चलिए देखते हैं क्या ट्रेड, और ये देखने के लिए कमोडिटी का डिफरेंट एरिया ऑफ एनालॉजी होता है जो मैं करता हूं: फंडामेंटल एनालिसिस, इंटर मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड सेंटिमेंट. What we are doing here broadly is the technical or timing side of the analysis. सो कमोडिटी इंडेक्स में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं अपना उन सेटअप यूज करूंगा, दैट इज फाउंटेन ऑफ गोल्ड, और जो मेरे लर्नर्स है आपके पास ये सेटअप अवेलेबल है. टेस्ला एक स्टॉक है जिसको मैं क्लोजली फॉलो कर रहा हूं, इन एंड आउट भी कर रहा हूं जैसे जैसे, बट टेस्ला इज मोर ऑफ माय ट्रम्प ट्रेड. प्रेसिडेंट ट्रम्प इज गोइंग टू विन द यूएस इलेक्शन, इसको फोकस करके टेस्ला इज वन ऑफ माय बेट. So here is MCA. First of all, we'll take a look at S&P GSCI, और उसके लिए मैं अपना इंडिकेटर अप्लाई करूंगा. इनवाइट ओनली में जाके SD रेनबो वेव वर्जन 1, एंड उसमें since we'll be doing commodities, I'll select the commodity setup and apply, and we'll select SD RSI X. So I'll do SD RSI X. I'll make it a little large, the table. Okay. So I can keep a check on all the commodities with this glance. Let me make it big as well, large. Adjust the chart. हाँ, अब आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, राइट? थोड़ा बड़ा हो गया ये. हाँ, अब आप लोग आई थिंक देख भी पा रहे हैं, साथ में रीडिंग भी देख पा रहे हैं क्लियरली. तो चार्ट से एकदम बहुत ही क्लियर है मेरे सेटअप में दैट इट इज वी आर गोइंग इन अ बियरिश ट्रेड इन कमोडिटीज. सो कमोडिटीज में ट्रेड रख के कीपिंग पार्किंग आवर मनी फायदा नहीं है, रैदर वी कैन कुड लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज, और वही मैंने किया है कि कमोडिटीज में मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज को देख रहा हूं. Even now if we break it up कि कैसा जा रहा है, we can look at the base metals as a pack. It is not good. Base metals not doing well. ये देखिए सेल सिग्नल के बाद नाउ बैकग्राउंड भी रेड हो गया, मतलब शॉर्ट ट्रेंड बियरिश हो गया. एंड मेरे इसमें 9 फैक्टर, 12 में से 9 फैक्टर रिमेन्स बियरिश इन केस ऑफ बेस मेटल. सो बेस मेटल विल रिमेन बियरिश. मेरे ये जो मीटर है नीचे आप देख पा रहे हैं, मीटर में मेजॉरिटी दिख रहा है बेस मेटल्स आर मोर इन द फॉलिंग मूड. नेक्स्ट हम लोग डीबीबी के बाद हम लोग देखेंगे डीबीए, दैट इज द रिप्रेजेंटर ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का रिप्रेजेंटर है डीबीए, उसमें भी सेल ऑफ. सो एग्रीकल्चर इज नॉट गुड एज वेल. सो ओवरऑल कमोडिटी स्पेस
मुझे वीक लग रहा है, ऐसा कोई जगह नहीं जहां पे मनी लॉन्ग साइड पार्क कर पाए, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा। ऑब्वियसली शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज, दोज आर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, मींस नॉट money parking opportunities. In addition to that, if we look at crude oil, individual commodity counter, it's very bearish. Crude oil हम लोग देखेंगे, of course. Let not look at, right, this is USO, US का crude oil fund, so it has been very bearish, the crude oil. So बहुत बढ़िया ट्रेड मिला है ये सब एरिया में। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एमसीएक्स बेस मेटल को देखेंगे। बेस मेटल में आई एम बियरिश, आई एम शॉर्ट इन बेस मेटल। मैंने हाईलाइट किया था शॉर्ट पोजीशन अपॉर्चुनिटी सोशल मीडिया पेज में एज वेल एज स्टूडेंट्स को भी। कॉपर में आई रिमेन बियरिश, इट रीच्ड एन इंपॉर्टेंट लेवल, but I think it can drop further, very likely it will decline further. Copper remains very bearish. फिर से री-एंट्री का अपॉर्चुनिटी आया था and with this copper has now significantly fallen. 12 में से 12 में से 11 factor is bearish, only one factor is bullish. 57% चांस सेलर्स जीतेगा, 50% चांस कंसोलिडेट होगा। ये तीनों इंडिविजुअली कैलकुलेट होते हैं, तीनों का समेशन, मतलब तीनों मिला के 100 होना जरूरी नहीं। दीज आर नॉट एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज, दीज आर प्रोजेक्टेड प्रोबेबिलिटीज। सो प्रोजेक्टेड प्रोबेबिलिटीज की हिसाब है आइदर सेलिंग या नहीं तो रेंज। तो बियरिश रेंज है ये कॉपर में मार्केट। बियरिश रेंज में जब ट्रेड लेना होता है तो सेल रेजिस्टेंस ट्रेड इज द बेस्ट वन टू हैव। नाउ विल टेक अ लुक एट एल्यूमिनियम। Aluminium is bearish. I remain bearish. This is a beautiful short signal, but aluminium movement was way fast. It did not give a pause. It clearly one-sided fall since it failed to break the long-term trend line. It is coming down sharply lower. एक चीज दो ध्यान रखना होगा, if we have to be cautious about one, that the preferred trade is somehow still buy breakout by support. दिस इज वंस अगेन, ये जो प्रेफर्ड ट्रेड्स, इसका कैलकुलेशन भी सेपरेटली किया जाता है, नॉट बेस्ड ऑन दीज लाइंस और कैंडल्स, टू डू अनदर राउंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे जो ये सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ मेगा बियरिश, दिस इज अ बियरिश नो डाउट, बट नॉट अ मेगा बियरिश। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑब्वियसली बाय ब्रेकआउट तो नहीं होगा, बट सपोर्ट का एक चांस है। और ये चीज अपने प्रोबेबिलिटी में भी दिख रहा है। आप देखिए सेल ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी 36%, डिस्पाइट वी आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग रेड सिग्नल, रेड कैंडल। सो ये जो डिफरेंट रीडिंग्स है, दिस थिंग्स हमें माइंड करना होता है वाया क्वांटिटी। तो जिंक में जो विच लुक्स हायर प्रोबेबिलिटी, हायर क्वांटिटी, एल्यूमिनियम दो सिमिलरली बेरिश, बट बेटर टू गो विथ लेसर क्वांटिटी एट दिस पॉइंट। तो हम लोग एल्यूमिनियम के बाद वी आर गोना टेक अ लुक एट जिंक। जिंक वी हैव सॉरी कॉपर में हम लोग देखे थे। जिंक इज रैदर डिफरेंट। जिंक यहाँ पे मच मोर स्ट्रॉन्गर, ये फ्लैट लाइन के पास आ चुका है। बाय ब्रेकआउट बाय सपोर्ट इज द प्रेफर्ड ट्रेड्स, बट अभी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बाय ब्रेकआउट भी नहीं, बाय सपोर्ट भी नहीं, बिकॉज इट्स अ फुल रेड कैंडल। तो हम लोग छोटा लाइट पोजीशन इन जिंक मेंटेन कर रहे हैं टुवर्ड्स शॉर्ट साइड। इसका भी मैंने दूसरा मेरा जो सेटअप है उसके जरिए हाईलाइट किया था। लेट मी चेंज, गो टू V2, switch off V1. In V2 let me select the cloud basic, and after that switch on the line. This is, you can see, beautiful movement lower or Dow structure breakdown. ये रहा, this is a head and shoulder pattern breakdown, so it has been a beautiful move since in zinc. Now let me hide and let's go back, switch off the V2, and let's bring the asset master back. So after the zinc is done, we're gonna take a look at gold and silver. क्या चल रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में? गोल्ड में फ्राइडे आई हैड ट्राइड ऑन द बाई साइड अ बिट एंड इट फेल्ड। मुझे कुछ मिला नहीं ऑन द गोल्ड साइड, रैदर एग्जिट करना पड़ा ऑन द फ्राइडे के बाद लॉस में।
and thankfully I did, because नहीं तो मंडे से और सेल ऑफ हुआ गोल्ड में. So it was in the hindsight, पीछे देख के लगा, yeah, it was a good decision. So gold में currently I'm more in the neutral mode ना, कुछ भी करने का plan नहीं है. Sell signal, buy trade win probability ज्यादा है, so it's a completely mixed market. Readings एक तरफ नहीं, एक इधर एक उधर. So it haphazard reading मतलब basically एक mixed market situation best would be to avoid. So gold में मैं currently avoid mode में हूँ. जो वहां पे ट्रेड अच्छा जा रहा है दैट हैज बीन सिल्वर. सिल्वर में ब्यूटीफुल ब्रेकआउट मिला है, ये मैंने हाईलाइट किया था क्लाउड मास्टर से. उसके बाद जो मिल रहा है सिल्वर में, दैट इज एग्जिट चांस. थोड़ा एग्जिट अपॉर्चुनिटी विद दिस ग्रीन सॉक्स मिल रहा है. सो विद दिस ग्रीन सॉक्स आई डोंट नीड टू वेट फॉर क्लोजिंग. ग्रीन सॉक्स या रेड कैप्स, these are partial square off, means these are risk management. पहले first rule is to protect the money, then to make the money. तो जैसे ग्रीन सॉक्स, बट ये ग्रीन सॉक्स आया, बट आई विल वेट टिल यूरोपियन आवर्स. यूरोपियन आवर्स 12:30 बजता है, तो 12:30 बजे तक अगर ये ग्रीन सॉक्स रह रहा है, दिस इज द टाइम टू पार्शियली बुक द प्रॉफिट. नाउ आफ्टर दैट कुछ पोजीशन डेफिनेटली होल्ड करेंगे, क्योंकि अभी भी सेलिंग ही है, बट पार्शियल प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करेंगे. इससे ज्यादा करेक्शन हो सकता है, फिर से हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी एज ए सेल रेजिस्टेंस मिल जाएगा. एंड प्रेफर्ड ट्रेड्स दिखा रहा है बाई सपोर्ट, तो एक बाई सपोर्ट होने का पॉसिबिलिटी है ही. देखिए कंसोलिडेशन होने का चांस है 64%, काफी ज्यादा है. तो इन दिस केस आई प्रेफर 12:30, यानी यूरोपियन मार्केट ओपन होने के बाद ग्रीन सॉक्स रिमेन्स, आई पार्शियल स्क्वायर ऑफ द पोजीशन. Now after this, I'll look at crude oil and natural gas. Crude oil beautifully going lower. एक बहुत ही बढ़िया bearish trend में है crude oil. Steadily moving lower. लग रहा है कि further decline is very very possible. अगर एक बार weekly chart दो commodity के लिए, we don't watch the weekly chart a lot, but this looks like a solid important breakdown. So crude can drop further. There is a definite possibility that crude oil will decline further. The way things are setting up, unless there is some other crisis changing the direction, crude oil looks very, very much bearish, and I'll remain bearish in crude oil. 12 out of the 12 factors are bearish. Either थोड़ा consolidation या तो fully 57% chance sellers जीतेगा. The only commodity that is showing kind of base formation for future buying, अभी तक ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं है towards buy side, but it is more of a अभी भी consolidation phase में ही है. हम लोग करेक्शन के बाद देखिए full red candle is a new selling opportunity, but हम लोग sell नहीं कर पाएंगे because ST Momo is bullish. तो व्हाट अलर्ट आप देंगे, आप यहाँ पे अलर्ट में जाके एस्टीमो शॉर्ट मोमेंटम बियरिश, ये अलर्ट देंगे. वंस द अलर्ट कम्स, देन ओनली विल बी मोर कॉन्फिडेंट दैट यस दिस कैन बी अ न्यू री-एंट्री, अ ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी. आफ्टर करेक्शन अ फुल रेड कैंडल इज अ री-एंट्री अपॉर्चुनिटी, बट नॉट इफ एसटी मोमो साथ में नहीं है. इफ एसटी मोमो इज नॉट इन फेवर, दैट इज नॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी. So ये रहे commodity के discussion friends. I hope this video was helpful to you. अगर help हुआ, don't forget to like the video. All the best from my side, and as always, happy trading.